So good morning, and it's your English class, and we are pursuing our chapter 1, the shoemaker. So let's start our chapter. Ready, everyone? So we have completed till the page number 4, and we are going to start with number 5 today. As the shoemaker sat looking fixedly by turns at Mr. Lorry and at Defarge, some long obliterated marks of an actively intent intelligence in the middle of the forehead gradually forced themselves through the black mist that had fallen on him. They were overclouded again. They were fainter. They were gone, but they had been there, and so exactly was the expression repeated on the fair young face of her who had crept along the wall to a point where she could see him, and where she now stood looking at him with hands which at first had been only raised in frightened compassion, if not even to keep him off and shut out the sight of him, but which were now extending towards him, trembling with eagerness to hold his face and love it back to life and hope. So exactly was the expression repeated on her face. Okay. So यहाँ पे किस चीज के बारे में बात हो रही है? About Lucy. Who is Lucy? Lucy कौन है? The daughter of Mr. Manet, the shoemaker. The Manet, who is Manet? The shoemaker is Manet. शूमेकर का नाम क्या है? मैनेट है, और मैनेट की जो डॉटर है लूसी, इस पैराग्राफ में उसके बारे में बात हो रही है। ओके, और वो सिर्फ क्या है, उसको डोर से बाहर अभी खड़ा किया गया है। डिफार्ज ने और लॉरी ने डोर से बाहर खड़ा किया है कि तुम वेट करो, और पहले डिफार्ज और लॉरी मिस्टर मैनेट से बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं तुम अभी वेट करो और देखते हैं कि उनकी कंडीशन कैसी है। Darkness had fallen on him in its place. He looked at the two less and less attentively, and his eyes in gloomy abstraction sought the ground and looked about him in the old way. Finally, with a deep long sigh, he resumed his walk. ठीक है कि डार्कनेस जो है वो उसके जहाँ पर वो बैठे हैं वो सारे में क्या है, डार्कनेस आ गई है, वहाँ सारे में क्या है, अंधेरा है। और वो क्या है, पहले लॉरी डिफार्ज जो है वो मैनेट से बात कर रहे होते हैं, और एट लास्ट क्या है, और उसने मैनेट ने अपना वर्क छोड़ा हुआ है। एट लास्ट जब उनकी बात खत्म होती है तो वो एक गहरी सांस लेते हैं। कौन? मैनेट। मैनेट क्या है? विद अ डीप लॉन्ग साई, विद अ लॉन्ग डीप साई मतलब एक गहरी सांस लेते हैं। ही रिज्यूम हिज वर्क, और अपना वर्क जो है उसे रिज्यूम करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं अगेन। हैव यू रिकॉग्नाइज्ड हिम मेंशियर? आस्क्ड डिफार्ज इन अ विस्पर। और डिफार्ज मैनेट से क्या पूछते हैं, क्या आप इसे पहचानते हैं? Yes, for a moment at first I thought it's quite hopeless, but I have unquestionably seen for a single moment the face that I once knew so well. तो कहती हैं हाँ, वो सिर्फ किस में जवाब देते हैं? हाँ, वो सिर्फ एक हाँ में जवाब देते हैं और उनकी फेस की तरफ देखते रहते हैं। Hush, let us draw further back. Hush. She had moved from the wall of the garret very near to the bench on which he sat. अब क्या है, जो लूसी है वो उस बेंच के पास आकर बैठ जाती है, उस बेंच के पास आ जाती है जिस पर कि मैनेट बैठे होते हैं, अपने फादर के पास आती है। There was something awful in his unconsciousness of the figure that could have put out its hand and touched him as he stooped over his labor. It happened at length that he had the occasion to change the instrument in his hand for his shoemaker's knife. It lay on the side of him, which was not the side of which she stood. He had taken it up and was stooping to work again. When his eyes caught the skirt of her dress, he raised them and saw her face. The two spectators started forward, but she stayed them with the motion of her hand. She had no fear of his striking her at her with the knife, though they had. She stared at her with a fearful look, and after a while his lips began to form some words, though no sound proceeded from them. By degrees, in the pauses of his quick and labored breathing, he was here to say, "What is this?" तो यहाँ पर क्या है, मैनेट को अपनी दूसरी तरफ से एक औजार की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो शू मेकिंग का वर्क कर रहे हैं। कभी दूसरी तरफ से उन्हें एक औजार की जरूरत पड़ती है। वो औजार उठाने के लिए जिस तरफ में लूसी खड़ी होती है उससे अपोजिट साइड में उनका औजार होता है, इंस्ट्रूमेंट खड़ा होता है। वो उसे उठाते हैं और अपना वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं, और देखते हैं कि दूसरी तरफ जो है वो लूसी
खड़ी हुई है, ठीक है। तो उन्हें डर होता है लूसी से वो डर रहे होते हैं क्योंकि वो एक अनजान लड़की होती है, मैनेट के लिए वो उसे पहचान नहीं पाते हैं और अपना नाइफ जो है अपने हाथ में पकड़ लेते हैं क्योंकि उससे वो डर रहे होते हैं। With tears streaming down her face, she put her two hands to her lips and kissed them to him. क्या करती है कि लूसी की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, वो बहुत दुखी है अपने फादर को इस तरीके से देखते हुए। वो उन्हें क्या करती है, किस करती है। यू आर नॉट द गावर्ड्स डॉटर, शी साइड, नो, हु आर यू। तो मैनेट उससे पूछते हैं क्या तुम गावर्ड की डॉटर हो, तो क्या एक लंबी सांस लेते हुए कहती है कि नहीं। सो हु आर यू, तो कौन हो। Not yet trusting the tones of her voice, she sat down on the bench beside him. Recoiled, but she laid her hand upon his arm. A strange thrill struck him when she did so, and visibly passed over his frame. He let the knife down softly as he sat staring at her, advancing his hand little by little. He took it up and looked at it. और यहाँ पर क्या है, वो थोड़ा सा जो मेल्ट हो जाते हैं, जो मैनेट है ना, वो डर रहे होते हैं लूसी से, लेकिन इस पैराग्राफ में वो थोड़ा सा मेल्ट हो जाते हैं जब वो उसके आंसू देखते हैं और वो कहते हैं कि ये लड़की कितनी परेशान है। तो वो जो अपना नाइफ उठाते हैं उससे उस खतरे से बचने के लिए उस नाइफ को क्या करते हैं, वो नीचे रख देते हैं क्योंकि अब उन्हें वहां पर कोई खतरा फील नहीं होता है। Okay, next is, in the midst of the action he went astray and with another deep sigh fell to her his shoemaking. और यहाँ पर वो दोबारा से क्या करते हैं, अपना shoemaking का वर्क स्टार्ट कर देते हैं और वो आपस में सभी लोग बात कर रहे होते हैं। So it's your chapter which is The Shoemaker, extract from A Tale of Two Cities by Charles Dickens, written by Charles Dickens. Okay, so word wonder, the grammatical section of this chapter is word wonder, the yellow portion. When two or more words are put together to form a new word with a new meaning, the new word formed is called a compound word. क्या है, when two or more words, दो या दो से ज्यादा शब्द are put together, उनको एक साथ जोड़ा जाता है, टू फॉर्म अ न्यू वर्ड, एक न्यू वर्ड बनाने के लिए, विद अ न्यू मीनिंग, एक न्यू मीनिंग के साथ, द न्यू वर्ड फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ कंपाउंड वर्ड। जो न्यू वर्ड बनेगा दो वर्ड को जोड़ने के बाद, तो उसे क्या बोलेंगे, कंपाउंड वर्ड। कंपाउंड मीन्स ही क्या है, जोड़ना। कंपाउंड वर्ड मीन्स जोड़ना। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल इज जैसे बुक, मार्क, time consuming, learning material, crime, novel, picture, perfect, by, line. Okay, next is page number 8. Page number 8. Okay, so in this exercise, point 1 is closed compound. Compound words have three categories. Compound words have three categories. First is closed compound, second open compound words, and third is hyphenated compound words. So closed compound words means they are formed when two unique words are joined together. They don't have a space between them. मीन्स वो कंपाउंड वर्ड जिनके बीच में हमें स्पेस नहीं देना होता है, स्पेस नहीं दिया जाता है, उनको कहते हैं क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड्स। ये दो यूनिक वर्ड को जोड़ा तो जा रहा है। फॉर एग्जांपल फायर, वॉक, स्केट, बोर्ड, फायर, फ्लाई। ओके, अच्छा इसके लिए एक एग्जांपल और हम ले सकते हैं, न्यूज पेपर। सो इट इज द वर्ड close compound. Next is open compound words. Open compound words, they have a space between the words. इन words के बीच में space दिया जाता है, but when they are read together a new meaning is formed. लेकिन इनको पढ़ा एक साथ जाता है और एक word का ये new meaning form करते हैं, जैसे ice cream, real estate, canvas, frock. Okay, and last is hyphenated compound words, which is hyphenated compound words. word से ही पता चलता है, hyphen word से ही हमें पता चल रहा है, hyphen means
जिन वर्ड्स के बीच में हाइफन का यूज किया जाता है वो हाइफनेटेड कंपाउंड वर्ड्स होते हैं। दे आर कनेक्टेड बाय अ हाइफन। ये किससे कनेक्टेड होते हैं? एक हाइफन से कनेक्टेड होते हैं। टू अवॉइड कंफ्यूजन, मॉडिफाइंग कंपाउंड्स आर ऑफन हाइफनेटेड स्पेशली व्हेन दे प्रेसीड अ नाउन। क्या है? तो उनके दोनों वर्ड्स के बीच में एक हाइफन लगा दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन, well respected teacher, protein rich diet. So these are compound words and three categories of compound